Hello, good evening everyone. Myself Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liyakat Namole Sir. Friends, we have started this free webinar series 2 years back in June 2022, and today is our 97th session of this series, Guruji ke Saath Guruvar. Today, I feel honored and blessed to welcome one of the topmost homeopaths of today's era, who is none other than our beloved Guruji, my parent, my guide, Dr. Liyakat Namole Sir. Sir is an author of bestseller book HOMOEOPATHY. He is the pioneer of group Ignited Minds by PHF, where more than 2,600 doctors learn on daily basis. He has discovered a unique method known as MML, that is Mind Method by Dr. Liyakat. The focus of MML is solely on mind, and empathy is the mantra. Friends, as we all know, Sir is the true master of gestures, and he has introduced gestures in the field of homeopathy with his keen observation and huge experience. Till now, Sir has enlightened us with 8 new age polychrests in this series with in-depth understanding and utmost simplicity. And I believe the way Sir simplifies the concept to make us understand quickly and easily is makes him unique and different from others. I'm sure we all must be excited and eagerly waiting to hear from Sir today. So without wasting much time, let's welcome our beloved Guruji, Dr. Liyakat Namole Sir, with huge round of applause. Welcome, Sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. What is the number of today? Which number lecture today we have? 97. 97. Oh my God. Only 3 lectures left now. 98, 99, 2000. Oh my Yes. God. I don't understand. Seriously, it is unbelievable. And I'm very happy the way we are going. I am hoping that we continue this for longer time, inshallah, as the time permits. Many people are demanding ki isko chalne do, but it's not so easy to continue it. I want to make the 100th session really something very grand, inshallah. So it'll be a little late, not on the like it won't be like the fourth Thursday after this. We'll be announcing the date of the 100th session soon. Anyways, let's try and understand my usual genre. Okay, the New Age Polychrests, as I call it. Okay, and they're proving to be New Age Polychrests, though. Yeah, of course. There are many of them. I think there must be 30 of these remedies which I use very often. Okay, maybe because I'm a bit senior than you people are. I'm seeing more cases than you people are. But you people are also seeing some cases which I don't see. Like I practice in a 2-tier city. Okay, Nasik, though I go to Bombay once a month, I go to Pune, many of the cities, but not the metro cities much. Like Bombay, I go once in a month. There also, I don't see those elite class patients much. I'm more of low middle class, low class. 5-10% elite class kind of patients out of my, I think I must have crossed 95,000 cases by now. Sort of that only 10% I've treated elite. All are like from low middle class, low class. Okay. So my experiences about very rare remedies are rare, but these are few remedies which I'm finding to be pretty common nowadays. Okay. And the remedies which I'm going to take are very, very common, in fact, for all the classes. Some remedies are like they don't really they are pretty much they're pretty much useful in all the classes of the society. Okay, only the presentation is a bit here and there. Okay, but some remedies are like really like diamond and marble and let's say platina or वो वाली सब ठीक है ना वो काफी
पैसे वालों की दवाइयाँ है, ठीक है। तो मेरे पास आती आती नहीं है, मेरे पास सादी सादी ब्रांड या स्टॉक स्ट्रेमोनियम एंड विद दोस पल्सर क्लास एपिया. Okay, more of these remedies. Snakes also, yes, I have. But not the most poisonous snakes. They are not there. Okay, not like mamba and all that. Okay, elapse and all is cool. Okay, now that is what I treat most of the times. Okay, coming to today's session, guys, I'm going to discuss three cases, if possible three, if possible two cases. Okay, these remedies are pretty similar. I will be discussing some 5-7 remedies today, inshallah, in comparison to what I am going to share the case today of. Okay, the case is very simple. It's like collection of multiple cases, but one single case I'll share, and then I'll be sharing other cases of the same remedies where I'll be explaining if possible, if the time permits. Okay, now let's go to a case. I been treating this boy for quite a few times, like 2-3 months. This boy was coming to me. One fine day, he came to me with huge reports, like something like 20 odd files, 21 files, and they were all filled with lots of investigations, loads of investigation, right from gastroscopy was done thrice, then proctoscopy, what is that called? Duodenoscopy was also done. CT scan was done, MRI scan was done, X-rays and sonographies were abundant. He had been to 3-4, what is that called as gastroenterologist and chest specialist also he had been to, because the presentation of the boy is he's around 30-32, little bald fellow, came with a cap. Okay, he's working in a small company. He's a private company. He works as usual. I said not managerial class, worker, labor class. I think plumber or electrician maybe. I think he's a plumber. Machine operator. Sorry, he's a machine operator in a company in the industrial estate that is there in Nasik. Living in a slum sort of area, not exactly slum, but not really higher than slums too. Okay, he has a side business, like his brother runs a business in whom he for the economy for the financial reasons he supports his brother. His brother has cable business. You remember television ko cable aati hai through which we see the channels we used to. Nowadays we have dish antennas more, but he still runs that business and he helps his brother do that. Yeah, he's an electrician too, part-time electrician too, and he's a machine operator. He gets 2-3 complaints. One is like hypertension, which he feels, for which antihypertensive is started with propranolol, I guess, for palpitations. So he has complaints of palpitations, heartburn, and one very peculiar rubric that he told me that whenever he sleeps in the company, okay, in the factory that he's working, he gets a straight sort of palpitation and he gets up. It is specifically in the night duties. Okay, when he has day duty, he doesn't get this problem. So he used to come to me every time before the night duty, and then he would come, doctor, now I'm going to get those palpitations. And he used to be scared. Okay. He used to be scared and he would be palpitating. BP used to be normal. His blood pressure tablet started just a month back. Not even a month back, 3-4 weeks back maybe. And every time he would come to me, he would ask me to check his blood pressure. He would ask me to check his blood pressure. He is a general practitioner or maybe the physician maybe. He started the antihypertensive and this propranolol for palpitations too. He was an antacid also. And to me also, he used to, every time he would come and say, Doctor Sahab, kuch checkup karna hai to kar lijiye. Should we go for sonography? I say, man, you have done sonography 7-8 times. You don't earn much. He said कि डॉक्टर साहब इतना नहीं कमाता हूँ, देखो ना मेरा पैसा तो सारा दवाई में ही जा रहा है, ट्रीटमेंट में ही जा रहा है.
मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं कभी फिट हूँ। डॉक्टर साहब मुझे अच्छी कमजोरी भी बहुत लगती है, कुछ ताकत की दवाई दो डॉक्टर साहब, आई नीड समथिंग powerful. So when he used to say power, I asked him, do you have impotency problem? He said, no, I have weakness problem. 3-4 times he was accompanied by his wife. He was referred to me by his brother. Okay, brother got better. That's why he was referred to me. This man did not come to me very regularly. In last 4-5 months, he must have come to me 2-3 times. But I used to give him medicine for a week and I would ask him to come back, but he would never come back. He would come back maybe after a month or something, and then he would come to me. He would take medicine. I used to give him, I think Argentiniticum I used to give him before for his anxiety and for his frivolity and for not being uh, regular in his treatment. Okay, and the strange symptoms that he used to give that. So he would come back from the job, and then he would worry also about the job. I am not earning much. I'm spending so much on medicines and so much on investigations and so many. He had done even typhoid tests. Can you imagine malaria? To general practitioners, whenever you go there, and CRP also used to be done. This is a pre-COVID course, not after COVID. But even then, that time CRP, some few of the doctors had done CRP 3-4 times, and then ANA test also somebody did. And one fine day, a doctor suggested him to go for angiography. Then he got scared, and then his brother brought him to me. He said, "Why don't you take this doctor's medicine for at least 5-6 months? You'll be fine. See, it's been 4 months now that you're not coming to him regularly. Come to him. I trust him very much." So he came to me, and I saw all the reports saying, like, I didn't see much. I told my um, the students, the intern, to see those reports, and they said, "Sir, all the reports are normal." This is the case. And this presentation I have seen in multiple cases. But this is a peculiar case I have seen in my life in the recent past. So let's discuss what you people feel can be the remedy. Hello, you can unmute, guys. Case नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए. Those people who don't understand English, let me tell you the case. ये बंदा मेरे पास में पिछले 4 महीने से आता था. रेगुलर नहीं था, एक आध बार महीने में आता था. और इस बार क्या हो गया कि उसको बहुत ज्यादा पाल्पिटेशंस थे. एक 3-4 हफ्ते से किसी फिजिशियन ने उसको एंटी हाइपरटेंसिव और प्रोपेनोलॉल शुरू किया था पाल्पिटेशंस के लिए. तो उसके भाई ने उसको जबरदस्ती ले आया मेरे पास कि एंजियोग्राफी तेरे को डॉक्टर ने बोला अब तू इधर चल, बिकॉज उसके कोलेस्ट्रॉल और सोनोग्राफी और स्कोपीज, दोनों भी स्कोपीज उसके नॉर्मल थे. ओके, तो गैस्ट्रोस्कोपी और क्या कहते हैं डियोडिनोस्कोपी भी नॉर्मल था. सोनोग्राफी भी नॉर्मल थी. कभी कभार थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स आता था. उसको हाइटस हर्निया भी नहीं है, माइंड यू. ओके. और उसको एक स्ट्रेंज सिम्टम होता था जब नाइट ड्यूटी रहे और जब वो फैक्ट्री में सोता था तो उसको बहुत धड़कनें तेज हो जाती थी. कई बार वो घर निकल के आता. तो उसको चिंता था पैसे का कि डॉक्टर साहब इतना पैसा मैं कमाता भी नहीं हूँ और आधे से ज्यादा मतलब मेरा पैसा मेरा समझ लो कि दवाखाने में ही जाता है. कमोबेश पिछले 2-3 साल से बंदा बीमार है और इतनी फाइलें मेरे पास में लेकर आया था इन्वेस्टिगेशन की. और मुझको भी 2-3 मरतबा बोला कि डॉक्टर साहब कुछ चेकअप करना है तो कर लो, कुछ चेकअप करना है तो कर लो. एंड मैं कभी जल्दी एज यूजुअल आप लोग जानते हैं होम्योपैथ कभी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराता भी नहीं है. और मेरे जैसा तो नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं कराता हूँ ज्यादातर. मैं तो एंजियोग्राफी करने के बाद भी दोबारा रिपीट एंजियोग्राफी, और आई तो डोंट एडवाइस मच. वी डोंट एडवाइस इवन सर्जरीज. इवन इन कैंसर्स आई डोंट एडवाइस एक्सीजन एंड बायोप्सी तो दूर है. सर्जरीज नहीं. आजकल तो हम लोग केमो को भी ना बोलते हैं. डिपेंड्स, लाइक स्टेजेस का भी वी डोंट रियली केयर. वी हैव वंडरफुल ड्रग्स which can take care of all these things. Certainly एलोपैथी से ज्यादा ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट का रख सकते हैं. ये तो मेरा एक्सपीरियंस है. पहले तो मैं केमिकल को बोलता था, कीमोथेरेपी को हाँ बोलता था. आजकल मैं केमो को भी, पेशेंट ने मुझे पूछा कि आपकी क्या सलाह है,
तो मैं मेरे दोस्त से बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है, आपको लेना है तो लीजिए, पर मेरी सलाह है मत लीजिए, अपनी दवाई लीजिएगा। और कॉन्फिडेंट नहीं है, पर कुछ चीजों का हमको तजुर्बा आया है कि केमो में पेशेंट का जितना लाइफ है उससे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा होम्योपैथी से हमको मिला हुआ है। किसी को भी कुछ डाउट कभी भी लगा जीवन में तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। You can call me anytime for such cases. I'll be helping you. Not even me, you can call any of the colleagues, Dr. Pranita, Mansi, Manisha madam. बहुत है, हमारी टीम है बड़ी, इंशाल्लाह। जी बोलिए। कुछ लोग कंप्लेन करते कि सर हिंदी में बोलिए, तो हिंदी में बोल रहे हैं। कुछ कुछ सीनियर डॉक्टर्स तो ऐसे बोलते हैं कि ये लेक्चर होम्योपैथी के लिए सही नहीं है। तो मैं क्या, ठीक है भाई, जो भी है। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो। आप लोग हैं नहीं है? एम आई टॉकिंग टू वॉल? हेलो। No, sir. Good No, evening, sir. sir. You're not talking to the wall, but I Thank just you. joined actually. So I'm Okay. Yeah. Anybody I'm else? I'm trying to figure out what the subject is for today. So those who were there before. Good evening, जी. sir. हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि आर्सेनिक माइजर भी है और आर्सेनिक को एंजाइटी है हेल्थ से रिलेटेड। और जी जब तक उसे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बीमारी निकलेगी ही और निकल नहीं रही है तो तब तक वो, क्योंकि उसके मन में है कि कुछ कुछ तो मेलिग्नेंट है या कुछ तो इनक्यूरेबल है, तो सर्टेन एक्सटेंट और नाइट एग्रावेशन भी आर्सेनिक में देखने को मिलता है। तो आर्सेनिक में भी अ पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो सोराइनम मैंने पहले लिखी थी वो इसके लिए लिखी थी कि सोराइनम में विदाउट एनी ऑर्गेनिक कंप्लेन और विदाउट एनी पॉजिटिव रिपोर्ट देयर इज क्रॉनिक वीकनेस और क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम लाइक कंडीशन होता है, पर उसमें एंजाइटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि आर्सेनिक में है। तो ये दो मेरी तरफ से सर। थैंक यू। मैंने भी आर्सेनिक के बारे में सोचा था पहले, ठीक है ना, क्योंकि आर्सेनिक तो मेरी वैसे भी फेवरेट है काफी। मतलब आई हैव एटलीस्ट नॉट लेस देन 1000 केसेस ऑफ कैंसर आर्सेनिक। आर्सेनिक भी मेरी बहुत ज्यादा है, बट दिस इज नॉट आर्सेनिक। ओके। मैं उसको अर्जेंटम देता था, थिंकिंग अबाउट द अनरीजनेबल एंजाइटी एंड वो जो उसका पागल के ऐसा पैसा खर्च कर रहा है उस पर मैं दे रहा था, बट दिस इज नॉट इवन अर्जेंटम। सो what else is possible, guys? What do you feel? Hello. Sir, PEI is it is criteria ours. Calcarea ars. So again, you're going to calcarea and arsenic. Okay. Anybody else? Why are you thinking of calcarea? You are still with you are still with arsenic because of the anxiety, doctor. Is it? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Palpitations are nitric acid can we think? Because of the night aggravation, you are thinking about arsenic. Okay, doctor. Anybody else? The nitric acid. Acha, for the anxiety. Okay, great. Night Yes. aggravation and just like arsenic, repeated wants great anxiety and fear about the health, Understood. Understood, beta. Understood. especially about the heart disease or what. Understood. Yeah. Anybody else? क्या इस केस में हम क्रेडुलस लेंगे क्योंकि जो I am sorry, doctor, you are not audible. Doctor, you're not audible. Can you make your speaking volume a little more? Hello? It's fine, sir. Yeah. Okay. So I'm saying कि अगर वो टेस्टिंग्स कराता जा रहा है एंड जैसे जैसे डॉक्टर्स उसको बोल रहे हैं तो लाइट डिजायर में तो वो है सर, क्या ये क्रेडुलस भी है कि वट एवर दे आर शोइंग ही इज कीप्स ऑन डूइंग इट? Well, वो तो नहीं मैंने पूछा, बट ऐसे नहीं लगा ना बेटा, क्योंकि यही मुझको भी इंसिस्ट कर रहा है ना। हेलो, कि हाँ जी। आप है ना, समझ रहे हो ना, कि डॉक्टर साहब आप चेक कर लो, चेक कर लो। समझ रहे हो ना? जी। और हाँ जी, एनीबडी एल्स?
हेलो सर एंजाइटी एनीबडी हाइपोकॉन्ड्रियकल एल्स लाइट डिजायर इज शोन राइट हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ बापू बोल हाइपोकॉन्ड्रियकल एंजाइटी डिलीजन सिक बीइंग हेलो हेलो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल यस व्हाई बापू यस यस बापू टेल मी सर व्हाई रिपोर्ट में तो कुछ कुछ नहीं आ रहा है लेकिन वो डर बहुत है ना very good so let's talk like doctors very good anxiety hypochondriacal very good and डिलीजन what सिक बीइंग hmm? डिलीजन सिक बीइंग delusion being sick क्योंकि उसको कभी अच्छा नहीं लग रहा है ओके ऑलराइट स्क्रीन शेयर करूंगा मैं कैसे करायचं ओके सो बापू ने एंजाइटी रिपोर्टर चैट हाइपोकॉन्ड्रियकल एंजाइटी बोला है और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल और क्या बोला बापू डिलीजन सिक डिल्यूजन बीइंग सिक बीइंग या बराबर है क्योंकि उसको बीमार बीमार लग रहा है ओके फेयर इनफ यस सो क्या आ रहा है काफी काफी रेमेडीज आ रही है ना फाइन so you are Sir, with is it Valeriana? 23 remedies you are with 23 remedies now so what else what what other rubric बार बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा है तो लेट अस गो टू द सिंपल rubric that is Light desire. लाइट डिजायर seeking the reason why is he falling sick so now calcarea so if you make a compound prescription then calcarea and arsenic together that is a good way of prescribing too what else yeah what else hello hello और कोई एंजाइटी मनी मैटर्स को कैसे पैसे की चिंता ज्यादा है पैसा जा रहा है उसका पैसा जा रहा है पर वो सच्ची बात है या गलत बात है जा रहा है ना पैसा हाँ। हेलो हाँ ये पैसा तो खर्च हो रहा है ना यार वो सच्ची बात है ना कि उतना तो देखो एक हाँ वो कमाता कितना है यार हाँ सही है ना हाँ ये और सर कुछ सर हाँ उसको सारे डॉक्टर्स को क्लिंग कर रहा है उसे लाइट चाहिए तो लाइट डिजायर लिया है ना बेटा आपने क्लिंगिंग भी कर रहा ना सर जैसे आप मुझे मेरा बीपी चेक कीजिए और सारे डॉक्टर्स हाँ को बहुत से डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं कि कैसे भी ठीक हो जाए बोल के हाँ तो क्लिंगिंग सर क्लिंगिंग वुड बी लाइक वन ना बट क्लिंगिंग तो पकड़ना इज क्लिंगिंग he is not clinging to one in fact he is moving from one dog to another देखो मैं रुब्रिक बता दिया है हाँ ड्राइविंग वन प्लेस टू अदर हाँ ड्राइविंग वन प्लेस टू अदर yeah in fact he is saying he is so anxious that is why he is doing the investigation right hello don't you think so यस सर देखो मैं सबको यही चीज बताता हूँ इट्स अ वेरी सिंपल फंडा दैट आई फॉलो आई टॉक लाइक अ सिंपल पर्सन आई डोंट एवर कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ डॉक्टर इनफैक्ट द रिसेप्शनिस्ट न्यूली ज्वाइन अभी सभी मेरे पास में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक के अंदर दवाखाना जैसा लगता है नहीं हंसने की आवाजें आती है खिलखिलाने की आवाजें आती है हेलो डू यू अंडरस्टैंड इफ यू कम एंड सी माय कंसल्टिंग यू विल बी लाइक अरे यार सच में ये लियाकत है क्या लाइक मतलब इसके बारे में इतना बोलते हैं यार ये है नहीं ये सब कुछ भी बोलते हैं ना आप लोग बोलेंगे कि ये वो नहीं है सो द वे आई सिट आई ट्राई टू मेक देम सो कंफर्टेबल ओके my way is like make them comfortable and like make them sit really like क्योंकि 2-3 मीटिंग्स के बाद आपके साथ में कोई खुले और फिर उनको कंफर्टेबल लगे उससे बेहतर आप पहले ही इतना माशाल्लाह कर दो भाई मेरे को अगर ऑफिस में काम करना होता तो मैं कलेक्टर बन जाता यार कौन सी बड़ी बात है उसमें एमपीएससी यूपीएससी करना
समझ रहे हो ना? ना ही कलेक्टर बनता तो क्लर्क तो बन ही जाता है, बैंकर तो बन ही जाता कम से कम, ऑफिस में काम करना होता है। तो माय क्लिनिक इज नॉट एन ऑफिस, इट्स लाइक क्लिनिक, it's a healing place, that's it, right? So सर कहीं पे ना वो फ्रिवलस लग रहे हैं कि वो जैसे इरेगुलर है ट्रीटमेंट में, और कहीं पर एकदम से अपने आप पास नहीं है रेगुलर ट्रीटमेंट में, इतनी जगह पर जाकर आ रहे हैं, फ्रीलेस कैसे लोग यहाँ? ओके ओके सर। He is moving to so many doctors, my dear. He's come with 20-25 odd files, right? राइट सर। सर बोलो। एंजाइटी अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस। Anxiety alternative indifference नहीं है बबीता. He is going to from one doctor to another doctor. Where is he indifferent? He is not coming to me. That doesn't mean he is indifferent. Hello, please understand, सर right? फियर विद एंजाइटी है ना? Anxiety with fear, yes, of course. Very good. See, रेपर्टरी का रूल याद रखिए, अल्फाबेट में जो पहले आएगा ना वो वैसा रूब्रिक लिया गया है. If there are two strong things like anxiety and fear, so A is first. So the rubric will be anxiety, fear with. That is how the repertoire is written. But if the fear is dominant, and then like if it is fear of dogs, okay, so basic thing is like fear, right? So it will come under fear. Okay. So whenever you are talking about the rubrics also, please respect them. Please respect them. Say anxiety with fear and understand the logic of repertoire too. यस Yes. Hello. Bushra. जी सर। It जी was सर। Bushra, right? जी सर जी। समझ में आया बुशरा? बहुत आसान है बेटा. एंटिसिपेशन सर. एंटीसिपेशन कैसे? सर वो नाइट ड्यूटी से पहले कम्स टू यू डर एंड से जाता कि मुझे है. अच्छा, एंटीसिपेशन क्या होता है? एक बार आपके साथ कुछ इवेंट हुई तो देन यू एंटिसिपेटेड फॉर द नेक्स्ट कि भाई दैट वे इट वुड हैपन. No, that's not. प्रायर एंजाइटी. No, anticipation is always for good thing. You are anticipating. Anticipation जैसे आप एग्जाम के पहले रिजल्ट के लिए एंटिसिपेट करते हैं. Are you getting me? Anticipation is like you are waiting for a good news. Okay, कौन है? म्यूट करा कौन है थे? एक कौन है? म्यूट करे ना. ओके. सर एंटिसिपेशन में जैसे अर्जेंटम नाइट्रिका में डायरिया हो जाता है तो एंटिसिपेशन इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. फियर तो है उसमें It is not मगर diarrhea because of anticipation. अच्छा He is going somewhere and then he gets diarrhea. You तो understand? एग्जाम्स की भी एंटिसिपेशन हो तो भी डायरिया हो जाता तो है. एग्जाम में आपको क्या चाहिए, अच्छा या बुरा? What do you go for? You go सर to एवरी नहीं, pass, नाइट चाहिए तो अच्छा you ही है. go to pass doctor or you go to fail? पास करने ही जाते हैं. So you are going for something, you are waiting for something good. ओके, थैंk Are यू. you getting me? You are confusing diarrhea with No, I am not. No, I am confusing at the anticipation. anticipation is always for good. ठीक है, Remember, thank you, like you want to thank you. go for, you want to catch the train. So you are going to do some work, right? You're not going to murder somebody, right? Even if you're सही, going to murder somebody, ठीक है. it is like you're going to get the pleasure out of that. Hello. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू. समझ में आया निगर? It's जी very जी easy. आ गया. जी Anticipation सर, के opposite क्या है पता है? Forebodings. If you are ठीक. expecting evil, हाँ तो फिर then it फोर is बोर्डिंग्स होंगे. foreboding. ठीक है, ठीक है, थैंक समझ यू में सर. आया जी निगर? समझ आ गया जी, थैंक यू हाँ. सर. So आप एंटिसिपेशन के सारे रूल्स निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा. ओके. मैं भी कंफ्यूज करके इसको अर्जेंटम दे दिया था बिकॉज ये इतना कुछ आया नहीं. पहले तो मैं इसको अर्जेंटम दिया और ये इसका फॉलोअप भी नहीं देता था. ऐसे आते ही फटाक से चला, दो बार या 3 बार आया था मेरे पास में. ओके. और कोई? सर काफी पुराना एंजाइटी केस है मेरा, बिकॉज मतलब कर ये 7-8 सकते साल थे पुराना सर? केस है. हाँ.
एंजाइटी बिजनेस ले सकते क्या सर, क्योंकि वो उस जॉब छोड़ के आता था और फिर कहता था कि मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ। अगर एंजाइटी बिजनेस होता इसलिए तो ये जी पहले ही इलाज करके फिर जाता ना वहां पर दवाई काम के लिए। उसको काम की फिक्र नहीं, उसको फिक्र काय की है कि क्या है उसको फिक्र? डिजीज, घबराहट की, घबराहट है और उसका पैसा Anxiety जा of रहा है, health. उसका पैसा एंजाइटी। जा रहा है। बट वो जी Talks business. इट्स नॉट बिजनेस, Talks business. टॉकिंग बिजनेस। Yes, आप ना हु इज इट? you know already know हाँ तो Tariq तारिक, Zubair. तो ना मेरी बात सुन भाई, यू स्पीक वेरी बेसिक रूब्रिक्स। कम से कम you are trying to contact me since last 1.5 years. You haven't joined the course where we talk this rubrics very simply. I don't know what is the problem with you people. Why you people are not joining the courses where I teach the basic things also. Okay. So I don't know what is the problem. You will never learn like this, Tariq. Okay. Anybody else? Where is he talking about business? Tell me. Did he He once ever says utter? he talks of profit and loss. He is spending so much money. He is wasting his time, but not getting rid of Did his he ever say disease. I'm wasting my time in treatment? He's just talking about his This plight. He is the person from lower class who is working in his in a company, as well as he's supporting his brother, as well as he's working with his brother in the cable business. So he's trying to make the two ends meet. Where is he talking about profit and loss? he says that Even if he it is says, my dear, you should try to understand the meaning of that. ना कि सच में एक बंदा जो कंपनी से 5-10 हजार महीना कमाता है, इधर 5-10 हजार कमाता है, इतने इन्वेस्टिगेशन में उसका इतना खर्चा हो रहा है, तो वो तो बात करेगा ना, तो उसके पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर दीजिए। टॉकिंग बिजनेस मतलब लेन देन की बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हमसे कहाँ किया उसने? उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा इतना पैसा तो इन्वेस्टिगेशन में और ट्रीटमेंट में ही जा रहा है। उसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आपके ट्रीटमेंट में मेरा इतना पैसा जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तारिक, आप थोड़ा सा यार कोर्स कर लो, ठीक है? सर वो लॉजिकल है अपनी बात में, पर वो बंदा लॉजिक लॉजिकल नहीं है ना रीजनेबल बबीता, क्या है ऐसा कुछ। बंदा लॉजिकल नहीं है ना बबीता। बंदा लॉजिकल है क्या सेंस से बताओ कि 4 बार डोडनोस्कोपी, 4 बार ये करने में, 4 बार सोनोग्राफी करने में, 10 बार इन्वेस्टिगेशन करने में, कहाँ लॉजिक है बेटा कविता? हाँ लॉजिकल बात तो ये कह रहा एंग्जाइटी है कि हाँ हेल्थ मेरा पैसा इसमें जा रहा है, तो उसके पीछे का मतलब समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से बाय पैसों की फिक्र, माय मेजर ऑफ माय मनी इज स्पेंट इन दिस? मनी मैटर्स सर, एंजाइटी बोल सकते खर्च नहीं हैं। काफी भैया, हो जा रहा अरे है मनी बहुत ज्यादा। मैटर की अगर एंजाइटी होती बेटा तो सरकारी दवाखानों में जाके वो इन्वेस्टिगेशन कराता, प्राइवेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कराया, तो उसका प्राइम फोकस इज हिज हेल्थ, द जी एंजाइटी। बट व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? Is he aware of the less money that he's making in his life, that he's earning in his life? Yes or no? यस सर, He's aware that he's earning less money in his life, right? यस सर, And his money is going, and right, that is, so his money is going, he doesn't earn much, and majority of that is spent in his treatment, right? So he's aware of his position, financial position or no? यस सर, ही इज अवेयर। And he's telling that, अब उसने ये बोलने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर साहब मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा सारा पैसा इसमें खर्च हो रहा है जी, इतना बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या बोल रहा है कि सर मेरा सारा पैसा तो इसमें खर्च हो रहा है। अगर तुम बोलोगे कि यार 5-10 हजार रुपये महीना खर्च हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है अगर आप घूम रहे हो इतने पागलों की तरह 10-15 डॉक्टर्स के पास में, परंतु उसके पास आ रहा ही कम है। अब ये दोनों बैकग्राउंड मुझे पता कैसे चले? जब उसने मुझे पैसे के बारे में बोला कि डॉक्टर साहब इतना मेरा खर्च हो रहा है, तब मेरा भाई तुम करते क्या हो? तो बोला मैं फैक्ट्री में वर्कर हूँ और मैं ऐसा केबल का, चूंकि उसका भाई भी केबल का धंधा करता है जो मेरा पेशेंट है, उसने मुझे बताया था। तो मेजर बिजनेस तो भाई का है, भाई उसको क्या देता होगा 5 हजार, इधर 10 हजार पेमेंट है, 15,000 रुपीज में उसको फैमिली चलानी है और इनने खर्चे करने हैं। उसके अंदर ये नाइट को काम छोड़कर आता है बीमार पड़ने पर।
सो अगर हम 3 बार, अगर आउट ऑफ 30 डेज हम लोग डिवाइड कर ले ड्यूटीज को तीनों शिफ्ट में, तो नाइट ड्यूटी आपकी 1/3 टाइम आएगी, मतलब 1/3 ऑफ हिज सैलरी इज 0. So he's getting the salary for how many days? 20 days. Are you getting me? So if he was paid 15,000, he would get 10,000 from the factory, right? Hello. जी सर, जी अगर राइट सर. उसका एंजाइटी बिजनेस होता तो ये 10 दिन नहीं जाने देता वो, समझ रहे हो? मे बी विथ अर्जेंटम ही वाज गेटिंग बेटर, क्योंकि अर्जेंटम वुड एक्ट partially for his palpitation and for his anxiety, so somehow he must be able to pull, but not always, right? You cannot pull it always. A partial remedy will act partially, right? So what I'm trying to tell you is that he feels that he is not got enough money that he can spend on these things. So what does this mean? Religion poor is. The man thinks that he's a poor man, right? Hello. Yes, Yes yes, sir. sir. My receptionist in Nasik Road clinic, I have 2 clinics. So one clinic that I have in Nasik Road, initially she started with 3,000 rupees payment. Now she's getting 10K. But even in 10K, you can't manage. She has 2 daughters, house, Satsuma, Devrani, rented house to manage. But she never complained of poverty to me. Right? Hello. But this man would say कि I'm spending so much of money in this. मेरा इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है. Basically what he feels कि मेरे पास में कम है. समझ रहे हो? So anything that you feel short of is nothing but delusion poor. Hello. Are you getting me? Yes, yes, sir. ठीक Yes, है, Yes sir. got it. We say ना कि Anything. I'm poor in Batra Medica, just like I feel Tariq is poor in rubric understanding, right? But that is my feeling. Of course, the day Tariq feels, he will start, he will take the course seriously. Anyways, do you understand? हम लोग बोलते हैं ना कि my son is poor in mathematics, my son is, he's poor in this, he's poor in that, right? So means you are short. You have other things, but you are short. You have it, but it is not enough, right? If this man was making like 30,000, 50,000, maybe he wouldn't have perhaps said this, right? Hello. Are you getting me? So how many remedies that we land with? Valeriana and belladonna, I guess, right? What are the remedies that are seen? Hello? Yes, belladonna and valeriana that we land up with, right? Now what else? नक्स भी है, नक्स सीपिया लाइट डिजाइन में नक्सोमी का नहीं है मैडम, लिखा हुआ है सर, 1 लिखा हुआ है, नहीं लाइट डिजाइन में नहीं है, ठीक है सिर्फ 2 रेमेडीज आ रही है बेटा. जी, ठीक है. यहाँ पर आपका ये चला गया. देखो अभी क्या क्या चल रहा था इसके पहले, लेट मी जस्ट सी. इसके पहले चल रहा था वीवर विद बेलाडोना, वेलेरियाना, कैल्केरिया, नाइट्रोमूर, फॉस्फोरस. ओके, जैसे हमने रिलीजन पुअर डाला, कैल्केरिया, नाइट्रोमूर, फॉस्फोरस चले गए. Got it? So we are with belladonna and valeriana. Now what else is remaining? Restlessness, palpitation during sir. Palpitation के टाइम रेस्टलेस होता है ना. But overall भी तो रेस्टलेस ही बन रहा है. रेस्टलेस विथ palpitation. क्या मैं चेस्ट में जाऊँ क्या? बापू कहाँ है बेटा रूब्रिक? नहीं, माइंड में. माइंड में रेस्टलेसनेस, palpitation during. ओनली रेमेडीज कोला. भाई कहाँ जाएगा? कोका कोला पीना पड़ेगा करने को. बापू क्या कर रहा है? और कुछ बोलिए. नहीं सर, वैलेरियाना है तो कंप्लीट में. ओके, बट नहीं मैंने नहीं लिया था. और कुछ. What else is there that you people are not understanding? Besides, he was telling कि कमजोरी लग रही है मुझको. So again, the weakness part also is covered by delusion poor, right? Hello. This is Valeriana.
This state that I've seen is Valeriana. Okay. How to stop that, beta? Sharing? Stop share. Okay. All right, stop share. Am I visible now? Okay. Yes. Yeah. This is Valeriana. Now let us try and understand Valeriana. Okay. Hello. Any doubts about Valeriana that you have? Hello? No, sir. No. See, एक rubric हम लोग और भूल गए. Besides oneself being. This rubric is very important, very much applied in this case. Besides oneself being का मतलब क्या होता है? आपे के बाहर हो जाना. वो तो एक्सट्रीम हो गया. ये पीछे ही पड़ गया खुद के कि मुझको ये है, मुझको ये है, मुझको ये. Besides oneself being मतलब तुम खुद के ही पीछे पड़े हो. हेलो. और oneself besides himself being नहीं है. oneself. हेलो. Understood? मतलब me. My concern is me. So this is where you may confuse with Cilicia and Natrum Cup because there's a rubric anxiety himself about. Hello. There is a rubric anxiety himself about. Okay. And one rubric that you people forgot. Why would he come to me every time before night duty? That rubric actually differentiated the case for me. इसी को एंटिसिपेशन लगा था पर आप उसको क्लियर करें कि एंटिसिपेशन ऐसा नहीं होता है कोई. देखो शेयर स्टिक में आ रहा है क्या? क्या दिख रहा है आपको? नहीं. डेंजर इंप्रेशन ऑफ. हेलो. डिल्यूजन. डेंजर इंप्रेशन ऑफ. दिस इज व्हाई ही वुड कम टू मी दैट अब नाइट ड्यूटी डॉक्टर साहब अब मुझे वो तकलीफ होने वाला है. डू यू अंडरस्टैंड? हेलो. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Rubric that differentiated belladonna and other remedies for me. This is where you feel even stramonium comes in play. These people will come to you, Doctor Sahab, तकलीफ होने वाली, आप दवाई दोगे कि मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊं? Have you heard this thing? डॉक्टर साहब कुछ है दवाई या फिर ट्रीट कर पाएंगे आप या फिर मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं? दो लोग कहते ये बात. Valeriana or Stramonium will tell this thing to you. But Stramonium is scared of getting admitted also. Hello. Valeriana is not scared of the admission part. Hello. And Valeriana is not scared of getting admitted. Okay, this is the difference. Remember this thing. उसको जो काम के नाइट मतलब डॉक्टर साहब को palpitation होगा, मैं आऊंगा. Hello, are you getting me? Hello. Am I Yes, sir. clear about this, are you clear, guys? Yes, sir. Besides oneself being maybe again belladonna is there, but delusion, danger impression of why is he going from places to places that is डॉक्टर साहब कुछ है तो नहीं, डॉक्टर साहब कुछ है तो नहीं. और ये तो क्लियर कट था. इनफैक्ट आई एंटर्ड द केस थ्रू ओनली टू rubrics that time. Besides delusion, danger impression of and light desire for. These were the two rubrics that I had taken that time. Okay, even if you take these two rubrics, Ramonium, Calibrum, Plumbum, Valeriana, and then I went to anxiety, hypochondriacal. Okay, I said, man, इसको कुछ नहीं फिर भी ये कर रहा है तो see, you're done. Delusion, danger, impression, light desire, and anxiety, hypochondriacal. These are because my funda is I take minimum rubrics with undoubted minimum rubrics is my funda. Okay, so delusion, danger, impression. Because doctor of palpitation, why has he started antihypertensive? Why is he taking propanolol? Whereas every time he used to come to me, his BP used to be normal. I gave him Valeriana 1M and 1M water dose 2-3 days and I stopped him. I stopped his antihypertensives. Propanolol immediately I stopped and antihypertensive I made it half 2 days and then I stopped it totally. I said कि रोज BP check करो शाम को, every alternate day you check the BP and Alhamdulillah, I didn't have to repeat Valeriana for quite a long time. Then I went, I think 3-4 months after that, he came again. He was like, Doctor, BP बढ़ने जैसा लग रहा है. Then I gave him Valeriana 10M 1 dose. And after that,
Every time he would come, he's on SL World now. Nothing else I give him. Rarely that he comes now, he comes for acute something, and I give him according to the totality. But he's totally cured of this thing. He started exercising, mind you, he has reduced his weight. Okay, please remember, उसने अपना वजन कम करा, he has started exercising, diet भी अच्छा कर रहा है माशाल्लाह से, he is eating non-veg also, which he was scared before. He started eating non-veg, he is taking eggs and very good diet. Okay, these are the changes that you expect in after your right medicine is done, after you give the correct similimum. These are the changes that you expect to happen. Okay, any question now? Any question? Now let us DD this with one more remedy that comes whenever a patient is coming with repeatedly one fear, and one thought. Can anybody tell? Seniors, especially, I would expect you to talk on this. What remedy comes? Hello? Anybody? Anybody? I think it's 6 o'clock. Huh? Tell me. Yes, beta. Babita? हाँ बेटा. मोनोमेनिया. Yeah, what is the remedy? सिलिशिया एक मुझे मालूम है, बाकी याद नहीं. Monomania is a bit different. We'll discuss about monomania. Yeah. Silisha, okay. Anybody else? Tariq? Tariq पे तारिक है क्या? ओ भाई, और कोई? Anybody else? Bapu? Bapu is my... Okay. Babita. Okay, Bapu, what do you think, beta? Sabadila. Sabadila, okay. Acha, Shafqat is saying Econite. Acha, Shafqat from Nagpur. Are you? Okay. Yes, sir. Or anybody else? Asafoetida, sir. Asafoetida. Okay, okay, Manpreet bhai. Asafoetida. Anybody else? Imran is saying aloes. Okay. Imran from which place? Imran Khan. Not Akola. Surat, अच्छा, केम छो भाई? इमरान एसाफेटिडा नहीं छे. और कोई एक पेशेंट आ रहा है, बार बार एक ही फियर लेकर आ रहा है, एक ही चीज लेकर आ रहा है बार बार. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इट इज थूजा. रिमेंबर, फिक्स थॉट. हेलो, सुई एक बार में अटक जाती है. इफ योर रेमेडीज फेल, think about thuja 0/1 once a day for 3 days and 3 days and then stop it. If it's better, then repeat it. But I would tell you 90 out of 100 cases, if a patient is coming with only one specific fear, dogs, कुछ भी एक ही सर एसिडिटी मतलब देखो हाँ, लेकिन of course ये नहीं कि फिर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे. If your indicated so-called indicated remedy is failing or working partially, give thuja. Simple 0/1 once a day for 3 days. Stop it. थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज आता है तो फिर 3 दिन के बाद गैप देके then give it for 1 week, stop it, give it for 1 week, stop it. That is how Dr. Herman used to do. He used to give 1 week gap and then see. Okay, 0/1 plussing करते करते देख के चलो. Okay, I think I am falling short of time. Again, diligent poor about time. Thank you very much. It's a pleasure talking to you people. Yes. Okay, we will take. I'll take the. Don't worry. Even if this 100 lectures are over, I'll keep continuing taking the lecture. Even if I don't take the lectures, we will be putting the videos on YouTube too. So don't worry. Okay, our work will continue. But I'm hoping to continue this series, inshallah, if my team agrees with me. Yes. But I would urge you people to really do the basic courses that I've been running since last 10 years. Dr. Pranita will tell about that. But those who do this small courses that I have 100 days with Dr. Liyakat, part 1, part 2,
100 Days with Dr. Liyakat is my child. I love that, like I love my books and I love like my lectures. That course I am very happy about. That has helped more than 2,000 plus doctors. I think more than 25 batches are successful of that. It's a very simple course. I would really urge you people to do that course. Then you will not have this simple queries like where to take clinging, where to take talking business, where to take, you will be, I think 20 remedies are there better in that, right? 20 remedies I have covered in part 1 and 30 remedies I have covered in part 2, right? So you should do those 2 courses at least. Baki infertility ये वो live courses आपको करना है करो, नहीं करोगे आपकी मर्जी. But these 2 you should do. Besides, if you don't like the course, take the money back. Yes. Yes, Dr. Paritha with a good smile. Over to you. Unmute yourself. Thank you so much, sir. I request Dr. Mansi also to start the video, her video, because she has also been very active in conducting all this. Dr. Mansi, I want to see your video also in this lecture of mine. Better if you can put it on. अगर तूने मेकअप किया है तो कर ले. है क्या? I sir. हाँ, कर तू the video on कर. I want to see all three of you in the screen. चालू किया? ठीक. हाँ sir. Okay. Yes, Pranita beta. Thank you so much, sir, for in-depth understanding of Valeriana, and thank you for adding one more pearl into the series of New Age Polychrests. I am sure. मानसीला पण spotlight करना बेटा. ठीक है, दिसले पाहिजे screen ला. बेटा. हाँ, बोल. Thank you, sir. Thank you so much. And again, it is proof how you say always say think simple. So through empathizing and through simple rubrics, how we can reach the remedy like Valeriana. So thank you so much. And I am sure these 9 pearls you have taught in this series will definitely help each one of us in the practice. Thank you so much. Thank you. You all can ask the questions on YouTube or on Telegram. Directly you can ask the questions on Telegram also. Okay. Go watch this lecture again on YouTube. Okay. Dr. Mansi is doing the editing job. I don't know what she edits and all. I don't know. So if anything is not there, it's not my fault. It is Dr. Mansi's fault because she does the editing. Okay. Dr. Pranita is not doing the editing of this. So you can contact Dr. Pranita for the courses and for the lectures and books, right, beta? And yes, don't worry. I promised you the second book. I will be giving you the book on 100th lecture. That is a promise. That's a word. That's a general base promise, inshallah, with a little deeper understanding of remedies. Thank you. God bless. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. This time India, Thank support for India Thank for you, sir. support India for World Cup. Okay, guys, 2020. This time India ne lana hai. Okay.